In this experiment, we have to design magic or hybrid tea using CST. And there are few objectives of this experiment. The first one is to learn the theory and application of magic or hybrid tea. And the second is that we have to learn that how can we design the magic or hybrid tea using simulation tool. Basically, hybrid tea is shown here. We have already discussed this hybrid tea in experiment number 1, where there was a simple introduction of hybrid tea, and inshallah we will use this hybrid tea in our upcoming experiments on hardware. So before we use this hybrid tea, let us look at the properties of this hybrid tea theory, and let us learn that how can we design this hybrid tea using CST. First of all, in its theory, it's very important to discuss its different characteristics and properties, that why we are going to design this hybrid tea, and what are the properties of this hybrid tea, and what are the application of this hybrid tea. An EH plane T junction is formed by attaching two simple waveguides, one parallel and other in series, to a rectangular waveguide which already has two ports. This is also called magic tea or hybrid tea or 3 dB coupler. The arms of the rectangular waveguide make two ports called collinear ports, i.e. port 1 and port 2, while the port 3 is called H arm, or the sum port, or the parallel port. Port 4 is called E arm, or different port, or series port. Basically, in this hybrid tea there are four ports. Here is a port 1, port 2, port 3 and port 4. This port 1 and port 2 are called collinear ports, and this H arm is also known as a collinear port with these ports, while port 4, known as ER, is a series port. So the cross-sectional detail of this magic tea can be understood by the following figure. These are the four ports of the magic tea: port 1, port 2, port 3 and port 4. Basically, in our last experiment, we have designed a simple waveguide with two ports. So here is a simple waveguide with port 1 and port 2. The third one port is HR, which is collinear. It is collinear due to its collinearity. Basically, collinearity is due to its direction, because E field, E arm is in this direction to the port 4, and here E direction is also in that direction. So port 1, port 2 and port 3 are the collinear ports, and port 4 is a series port. So these are the four ports of the hybrid or magic tea, and this is used for different applications of RF and microwave engineering, where we deal signals in different ways. So there are some characteristics of this port that look like to be magical. That's why it is called magic tea port or hybrid tea port, and its function and operation is very interesting. Basically, magic tea junction is simply consists of four ports, and here it is shown as ER, HR, and this is simple waveguide. Port 1 and port 2 are the ports of the simple waveguides, and port 3 is the port of the HR, which is parallel to the port 1 and port 2, and ER is the port 4, and this port is in series with these 1, 2 and 3 ports. This is the basically magic tea junction of the hybrid tea. Okay, that was a simple theory of this
magic or hybrid T, how this T can works, and how this T is useful in our RF and microwave engineering signals. Let us look at the characteristics of E and H plane T. There are basic 4 points of its characteristics, of its operation, that how it works. The first one characteristics of this hybrid or magic T is that if a signal of equal phase and magnitude is sent to the port 1 and port 2, then the output at the port 4 is 0, and the output at the port 3 will be additive of the both ports 1 and port 2. It means that if we have already said that port 1 and port 2 are in series, and port 3 is also is in series. So if we send signal at port 1, then signal will travel as same as if we send signal at the port 2. So signal from the port 1 and signal from the port 2 will travel in a same way, as these ports are at the front and back of this simple waveguide. So if we send signal on port 1 or port 2, then in both cases signal will travel in the same direction. And the point 1 clarifies that if we send signal from the port 1 and port 2, and the signal is of equal phase and equal magnitude, then the output at the port 4 will be 0, because port 4 is in series. So in this way the signal at the port 4 will be 0, and the port 3, that is parallel to these ports. So output at the port 3 will be the addition of signal from the port 1 and port 2. So if we send a signal of same magnitude and same magnitude and same phase from port 1 and port 2, then output at the port 3 will be the addition of these two signals. So the first point clarifies that according to its characteristics, this hybrid T is used for the addition of signals. Here we can see that if we send a signal of same phase and magnitude to the port 1 and port 2, then output at the port 3 will be the addition of both ports 1 and 2. So the first application or first characteristic of hybrid T is to add the signal, that by using this hybrid T we can easily our two signals of same phase and magnitude. Okay, further proceed to the point 2. If a signal is sent at port 4, if we send signal at the port 4, E arm, port 4 is also known as E arm, then the power is divided between the port 1 and port 2 equally, but in opposite phase, while there would be no output at the port 3. Hence signal sent from the port 4 to the 3 will be equal to 0. S34 stands for that if we send signal from the port 4 to the port 3, then this parameter will be equal to 0. So according to second characteristic, if we send a signal from the port 4, which is ER, and this port is in series with these two ports. So if we send signal from the port 4 or EM, then signal will be divided, and it will travel to the port 1 and port 2 in opposite direction. And we will see in simulation that if we send a signal from the port 4, then how a signal can be divided equally, and how can it travel in opposite direction towards the port 1 and port 2. So this is the second characteristics. But if we send signal from port 4, then output at the port 3 will be 0. So this is the second characteristics of hybrid or magic T. Here S34 stands for if we send signal from 4 to the 3, then this parameter will be equal to 0. Okay, third point,
If a signal is fed at port 3, if we send signal from port 3, then power is divided between the port 1 and port 2 equally, while there will be no output at the port 4. Hence S43 will be equal to 0. uh, as in previous point, we have said that if we send signal from the port 4, then output at the port 3 will be equal to 0 and signal will be divided between the port 1 and port 2. So in the third point, if we send signal from the port 3, then it will be divided equally to the port 1 and port 2, while output at the port 4 will be equal to 0. So these are the same points that if we send signal from port 4, then output at the port 3 will be equal to 0, and if we will send signal from port 3, then output at the port 4 will be equal to 0, as these two ports are in series and parallel. So these are the characteristics that if we send signal from port 3 or port 4, then signal will be equally divided to the port 1 and port 2, but signal sent from the port 4 will not come to the port 3, and similarly signal sent from the port 3 will not be received at the port 4. So these are the three characteristics. The last one characteristics, so that's why in third characteristics we have written that S43 will be equal to 0, means that signal sent from the port 3 to the port 4 will be equal to 0. Fourth one point, if a signal is fed at one of the collinear ports, as we know that there are two collinear ports of the main waveguides, port 1 and port 2, and if we send a signal at one of the collinear port, then there appears no output at the other collinear ports, as E arm produces a phase delay and H arm produces a phase advance. So in this case we will see that if we send a signal at the port 1 and port 2, then signal will travel in the same way, but as there are two ports in its way, port 3 and port 4, and we know that E arm or port 4 basically phase delay, it produces a phase delay, and H arm produces a phase advance, so overall signal will not received at the port 2. So in this way we can easily see this phenomena in our simulation part, and at the end of this experiment we will observe this fourth point as well. And point 1 is repeated here, that if we send signal from the port 2 and it is going to be received at the port 1, or if we send from signal from port 1 and it is going to be received at the port 2, then these signals will be same, as we know that port 1 and port 2 have same characteristics, and these are the front and back sides of the main waveguide. So signal sent from the port 1 and signal sent from the port 2 will travel in a same way, and inshallah in this lab experiment we will check and observe all these characteristics of the hybrid tree in our simulation part. Okay, there are some applications of E and H plane tree, and before we design the hybrid or magic tree, it is very necessary to look at its application of E and H plane tree or hybrid or magic tree. The first application of E plane junction is used to measure the impedance, and we will perform on hardware that how we can measure impedance using this hybrid tree. A null detector is connected to the E arm port, while the microwave source is connected to the H arm port. The collinear ports together with these ports make a bridge, and impedance measurement is done by the balancing the bridge. So it acts like a bridge, and we can easily measure the impedance in our experiment, and we will perform this experiment in hardware as well, inshallah. Second application of hybrid tree is that this tree is used as a duplexer. Duplexer is a circuit which works as a both transmitter and receiver.
using a single antenna for both purpose. As we know that port 1 and port 2 used as a receiver and transmitter, and they are isolated, hence will not interfere. So according to its characteristics, we can say that it can be used as a duplexer. Antenna is connected to the E-arm port. A meshed load is connected to the H-arm port, which provides no reflection. Now there exists a transmission or reception without any problem. So in this way, we can use this hybrid or Magic T as a duplexer. Similarly, one of its major application is that this hybrid T is used as a mixer. E-arm port is connected with antenna and H-arm port is connected with local oscillator. Port 2 has a matched load which has no reflection, and port 1 has a mixer circuit which gets half of the signal power and half of the oscillator power to produce IF frequency. So these are the applications of hybrid arithmetic T, and in addition to the above application, an E-H-plane T junction is also used as a bridge microwave discriminator. So there are a few other applications of this hybrid arithmetic T as well, but that were the basic applications of hybrid arithmetic T. Now move toward the portion of its design, that how can we design this magic or hybrid T using simulation tool or CST. So there are a few steps. First of all, we have to design a simple waveguide as we have performed in our last experiment. So let us start CST, and there are a few design steps of this hybrid or Magic T. So first of all, click on create project, select microwave, RF and optical, select antennas and click on next, waveguide, horn cone, and next, select time domain. These are the units, and click on next. There is no need to define the minimum and maximum frequency at this level, and to define the monitor or define frequency. First of all, we have to design hybrid or Magic T, and then we will decide that which type of range should be selected here for this experiment. Okay. The first point is the design of initial waveguide. So to design initial waveguide, we have to go to the modeling, select brick, and press escape key. A dialog box will be shown, and enter the following values in the dialog box. We will discuss the type of material. We have already discussed that material that can be used for such type of equipments is copper, PEC, perfect electric conductor, aluminium, or this type of material can be selected, and here we will select aluminium for this hybrid T. Okay, first of all, go to view and click on working plane. So each and every part of this hybrid T should be clear. Go to modeling and click on brick, press escape key. A dialog box will be shown, and name this dialog box according to the lab manual, and we have suggested this name for name as a waveguide. So put here as a waveguide. Okay, the values minus 11 to the plus 11, minus 6 to the plus 6, minus 50 to the plus 50. These values are exactly same as we have used in our last time experiment in the design of simple waveguide. So that's why I have decided that similar values should be used here for the design of main or simple waveguide. So we are going to use the same values as we have used in our last experiment.
So put here the same values, -11 to the +11, -6 to the +6, and -50 to +50. Select the material, load this material from the library, aluminium, load. Okay, click on preview and check its preview that we are using the same values as we have used in our last time experiment. We are using these values because we have already calculated its resonating frequency in our last time experiment, so there will be no need to calculate any other value if we use similar values that we have already used in our last time experiment. Click on OK. This will be our main waveguide. So as we know that the portion inner portion of this waveguide will be hollow, so click on modeling and define another brick. Enter the following values in the dialog box with the 1 mm difference, and then subtract this type of waveguide from overall waveguide, so that its inner part should be hollow for proper waveguide. So go to modeling, click on brick, press escape key, and name this dialog box as a waveguide cut, because we have to cut this portion. Waveguide cut. Enter the following values here, as we have to cut this portion. So -11 to the +11 was the values in the waveguide, so we have to put -10 and +10 to cut the inner portion. So -10 to the +10, -5 to the +5. These were the values in x-axis and y-axis, because in x-axis and y-axis we have to produce a gap of 1 mm from each side, but in z direction, in this direction, we need not to produce any gap. We have to cut the same portion as we have decided in the main waveguide code. So it will be -50 and +50. Material is aluminum. Click on preview. You can see that it lies inside this main waveguide. So click on OK, and now we have to subtract this portion to make this portion hollow. So go to the components. Now you have these two components, waveguide and waveguide cut. So if we select waveguide cut first, and then from modeling we subtract this waveguide cut from the waveguide and press enter, then it will remove all the portion. So press Ctrl Z and let it be clear that first select the higher portion and then subtract this lower portion from the higher portion. So first of all we have to select waveguide, and then go to modeling and boolean, and then subtract this waveguide cut, which is smaller portion, and press enter. Then it will be our main waveguide. So this is the same portion as we have performed in our previous experiment, that this is our main waveguide. Okay, now further move towards the design of E-arm and H-arm. So first of all we have to design E-arm, which is in series with this main waveguide portion. Okay, it's not difficult to design this E-arm. Simply go to the modeling
click on brick, press escape key, and name this portion as ER. Okay, now we have to decide the values, and if we rotate this main waveguide, we can easily understand that how we have adjusted these values. In this direction, this is a x-axis part, and this is y-axis portion. So x-axis portion will be same as we have taken the values in our main waveguide portion. So here you can see that in a dialog box, x-axis portion is same as the portion of x min and x max in main waveguide. So put the similar values -11 and +11 for this ER, as in x-axis direction its values will be same. Okay, now in y-axis direction we have to start this from the upper part, as we are going to design this ER above this main waveguide. So we have to start from this upper surface, and to start from this upper surface we will select +5 to the 30. Basically we are going to design the overall length of this ER as a 25 mm, and as we are going to start from the point 5, so we have put y max as a 30. In this way we can get its length along the y-axis is equal to 25 millimeter. So in our previous main waveguide portion, the upper surface was at 6, so 1 mm thickness, and we have to include this thickness as well in this ER. So we will start from the 5 to the 30. So put here y min as a 5 and set this y max as a 30. Okay, z min will be equal to this portion and this portion is overall I think it is about the 12 mm. So we will start this z min as a -6 and z max as a 6. So put here -6 and 6. The same material will be used for this ER. Click on preview and rotate and check this portion. So this is the ER which is in series with main waveguide, and this portion is the same as main waveguide in x-axis, and its thickness is same as the thickness of this main waveguide, while its height along the y-axis is set to be 25 mm. So I think it's okay, and click on OK. This is our E portion or ER, but this is not a hollow surface. So first of all design another brick to make its surface hollow. Okay, first of all we have to insert this portion of ER to the main waveguide. So insert this portion, go to the ER and click on modeling, select insert option from the boolean and select this waveguide and press enter. So this portion of the ER will be inserted to the main waveguide. Here is a I think I have missed the one option, which is that how can we make its hollow surface on ER. So first of all we have to the next is the dimension to the cut ER. We have to cut this ER such that we can make this as a hollow surface. So again go to the modeling and select brick, put some values to make its surface hollow. So first of all rotate this portion,
such that we can easily judge that our design brick lies inside exactly or not. Go to the modeling, select brick, press escape key and name this as a ERM cut. Okay, enter the following values. Okay, while entering these values of x mean, x max, y mean, y max, let us look at the direction and values of this main waveguide. Okay, this is x direction and this is y axis, and this direction is z direction. As we have seen that in x axis we have set these values in our ERM as a minus 11 to the minus design of ERM minus 11 to the plus 11, and here we have to set these values as a minus 11 and plus 11. I think these values should be minus 10 and plus 10, because if we set these values as a minus 11 and plus 11, then all the portion minus 10 and plus 10, there is some mistake in lab manual. And similarly, if we see the y-axis, now y-axis is the height of this ER, and we have to cut all the height of its y-axis values. So set the similar values as we have put in our ERM design, and these values are 5 and 30. Similarly, z-axis, we have set the values minus 6 and plus 6 in z-axis values, and we have to make a 1 mm thickness, so this value will be equal to minus 5 and plus 5. Okay, these are some values, and I think this minus 11 and plus 11, minus 6 and plus 6 are not correct values. There is a mistake in this manual. However, we can easily check this from preview. So rotate and click on preview, check these values. So this box lies inside this ER, and if we change these values as a minus 11 and plus 11, and similarly here minus 6 and plus 6, then it will cover all the portion and all the arm will be okay. So there is a mistake in lab manual, so set these values as a minus 10 and plus 10, and here minus 5 and plus 5, and click on preview. You can check that this portion lies inside this ER, and it provides 1 mm thickness on the sides of this ER. So if we click on OK, then we have to subtract this portion, and if we are not interested to perform the subtraction process, then we can easily cut this material from this portion by selecting any other hard material that cannot be merged in this material. So select here nickel, and click on OK. It will show a dialog box, and this dialog box have option that cut away the highlighted shape. So press OK to cut this portion. The portion should be cut down, but okay, press Ctrl Z. Okay, this is ERM cut. Check these values again. Y-axis 5 to 30, and minus 10 plus 10, and minus 5 plus 5. Okay. Go to the modeling
First of all, select this waveguide and go to the modeling and subtract this portion of arm cut. Okay, cancel. First of all, select ER and subtract this arm cut from the arm and press enter. Okay, now you can see that this is arm and this arm has a hollow surface. Click on the component 1 that we can observe overall this waveguide and arm as well, and you can see from here that ये आई थिंक इसका जो इनसाइड पोर्शन है वो अभी तक जो है वो कम्प्लीटली कट नहीं हुआ, तो हम आर दोबारा जाके इसको अटैच कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशन हमारे पास उस तरह से हमने रखी हुई हैं कि नहीं रखी हुई। ये हमारे पास डिफाइन ये भी इसमें वाई मीन वाई एक्सिस के रंग 5 to 30 था, और जो हमने इसमें कट किया है ये आर्म कट किया है वो भी हमारे पास क्या है 5 to 30 है। तो इसका ये जो पोर्शन है ये प्रॉपर्ली कट होना चाहिए। ओके, इसको एक दफ़ा ज़रा दोबारा ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर कट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपरली जो है वो कट हुआ है। ठीक है, जब हम अकेला आर्म सेलेक्ट करेंगे, जब कंपोनेंट 1 पे क्लिक करेंगे तो जाहिर बात है इस वेव गाइड की भी हमारे पास डायरेक्शन आगे आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आर्म है, प्रेस 5 करें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से बिल्कुल सामने इसकी शेप आ जाएगी, और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका आर्म आ गया है। ओके, नेक्स्ट ये हमने कट कर दिया। अगर कट नहीं होता तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हमने देखा है कि अभी वो कट नहीं हो रहा था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो भी हमारे पास उसका पोर्शन कट डाउन हो गया। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिज़ाइन HR and go to the modeling and select brick from the modeling, press escape key, dialog box will be shown and put the following values in the dialog box. So go to the modeling, click on brick and press escape key. Name this portion as HR because we are going to design HR. Now what will be the value of x min, x max, y min, y max, z min, z max? So first of all, one thing is clear that if we rotate this portion, then this is the y axis. So y axis portion will be same as the portion in the main waveguide, and that's why we have adjusted these values as a -6 and +6, because we can see that this y-axis portion should be same for this HR as we have adjusted the values in the main waveguide, because the height of this HR along the y-axis will be same as we have adjusted the values in the main waveguide. That's why here y min will be equal to -6 and y max will be equal to +6. Okay, x axis, we have already seen that this portion, this B portion of this main waveguide, or this arm, or this H arm or E arm will be same, and we have adjusted this portion as a -11 and +11. So along z axis it will be the value of the parameter B from this point to this point, from this point to this point. So along z axis we have to adjust this value as a -11 and +11. -11 and +11 means that there will be a 22, and in last experiment we have said that B will be equal to 22 mm, or 22 multiplied by 10 raised to power -3 meters. So these are the few parameters that we have to adjust in a proper way of predefined rules and regulations of the hybrid teams or waveguides. Okay, the last one parameter is the x min and y min, and x min y min will be its length,
So we will adjust this as minus 10 to 40. X mean will be equal to 10, as we know that this portion is starting from the 11. So by subtracting this 1 mm thickness, we have to start this HR from the 10 to the 40, and 10 to the 40 means that its length will be equal to 30. Okay, click on preview and you can see this in view by rotating this portion, that this H arm is properly adjusted in this direction, and this is in middle, as well as its portion along the y-axis is same as the portion of the main waveguide. So I think it will be okay. So press OK, and this portion is showing the option. These options, click none and press OK, because I have not changed the material of this HR. So first we can easily change this material. So click on the HR, right click on the HR and change material of this HR. So that material was nickel, but we have changed this to the aluminium. Press OK. So this is our HR. The next task will be to insert this portion in our main waveguide. So select this HR, go to the modeling and select insert from the boolean, and insert this option to the overall waveguide. Press enter. So this portion will also be inserted to the main waveguide. So next step in this design is to make the hollow surface of this HR. So go to the modeling, click on the brick, press escape key and name this brick as HR cut. In adjusting the values of this HR cut, we can easily decide that as we have adjusted the value in y-axis as a -6 to the +6, so we have to create 1 mm gap on both sides. So y min will be equal to the -5 and y max will be equal to the +5. So adjust this value as a -5 and +5. Similarly, along the z-axis, these values are -11 to the +11. So if we want to create the gap of 1 mm on both sides, so start this from -10 to the +10. So put -10 and +10 in the brick. Okay, x min and x max value will be same, as we have adjusted the values in the HR, because this is the length and we have not create any thickness of the 1 mm at the front or back, and it should be hollow. So similar values will be used here in x min and x max values, and these values are 10 and 40. So adjust these values as a 10 and 40. Click on preview. You can check that 1 mm gap is present on all the sides of this HR. So click on OK and cut this highlighted shape away from the portion, but again there is a problem in cutting this type of portion. So no problem, we can use the next option, and that option is the subtract options. So select so press Ctrl Z and select HR and go to the boolean and subtract this HR cut from HR and press enter. This portion. Okay, so this is overall hybrid tea or magic tea. So that was the design of this magic or hybrid tea. Okay,
The next portion is to assign waveguide ports to this hybrid or magic tree. Now, as we have studies in the characteristics of magic or hybrid tree, so set port 1, port 2, port 3 and port 4 in a proper way that we have discussed its characteristics in the portion of our लैब मैनुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि इसमें जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चले जाते हैं, हम साथ साथ ओपन कर लेते हैं, बल्कि उसकी जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। उसमें जिस तरह से हमने ये पोर्ट्स एडजस्ट की हुई हैं उस हिसाब से हम इसकी पोर्ट्स एडजस्ट कर देते हैं, ताकि हम इजीली यहाँ पे ये देख सकें कि जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई हैं कि अगर हम पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे सेम सिग्नल भेजते हैं तो आउटपुट पोर्ट 3 पे होगी, पोर्ट 4 पे होगी। तो इस हिसाब से हम पोर्ट 1 और पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 के नेम जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ताकि बाद में जब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करें सिमुलेशन में तो हम इजीली ये देख सकें कि हमने अगर पोर्ट 1 पे ये किया था तो पोर्ट 4 पे ये हुआ है, पोर्ट 3 पे ये हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दी लैब मैनुअल, वैसे तो आप इसको नाम डिफरेंट दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जो हमारे पास मेन वेवगाइड है उसकी फ्रंट अगर हमारे पास पोर्ट 1 है तो बैक को हमने पोर्ट 2 का नाम देना है। तो इसलिए एक तरतीब के साथ हम पोर्ट्स असाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्ट 1 असाइन करेंगे, फिर पोर्ट 2 असाइन करेंगे, फिर पोर्ट 3 असाइन करेंगे और उसके बाद पोर्ट 4। अब ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स हैं, इन पैरेलल पोर्ट्स में हमने ये देखना है कि पोर्ट 1 और पोर्ट 3 जो है वो हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स हैं। तो इसलिए पोर्ट 1 और पोर्ट 3 पैरेलल पोर्ट्स अगर हैं तो इसको हमने पोर्ट 1 का नाम देना है। उसके बाद हमने पहले पोर्ट 2 डिज़ाइन करनी है एंड देन वी हैव टू डिज़ाइन पोर्ट 3 एंड पोर्ट 3 विल बी द HR पोर्ट एंड पोर्ट 4 will be the ER port. So assign the ports according to this scenario such that we can easily check our characteristic of this hybrid H-plane tree. Okay, so selection of port is not too much difficult task. So open this portion so that we can assign the ports as per diagram. Okay, व्यू में जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको 5 प्रेस कर दें तो ये हमारे पास मेन पोर्शन आ जाएगा और इस तरह से ये हमारे पास एक आ जाएगी। कंपोनेंट 1 के ऊपर क्लिक कर दें ताकि ये पूरे का पूरा पोर्शन इसका शो हो जाए। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मेन वेवगाइड है जिसका फ्रंट भी है हमारे पास और बैक एंड भी है। ये हमारे पास ई प्लान है और ये हमारे पास एच प्लान है एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम ये कह चुके हैं कि ये मेन वेवगाइड में ये पोर्ट 1 होगी तो ये पोर्ट 2 होगी, पोर्ट 3 जो है वो यहाँ पे होगी जो कि HR में होगी और पोर्ट 4 ये होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको पोर्ट 1 का नाम देते हैं तो ये इसके बैक एंड पे पोर्ट 2 असाइन करेंगे। देन ये हमारे पास क्या होगी ओवरऑल पोर्ट 3 और ये हमारे पास क्या होगी पोर्ट 4 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्रेस किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास मेन वेवगाइड का फ्रंट पोर्शन है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें पोर्ट 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पोर्ट 1 असाइन करते हैं। तो F प्रेस करें और ये इसका पोर्शन हमारे पास जो है वो इस तरह से आ रहा है। इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करें और वेवगाइड पोर्ट असाइन करने के लिए सिमुलेशन में जाना पड़ता है और यहाँ से वेवगाइड पोर्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, जब ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में वैल्यूज़ एडजस्ट करनी हैं। हम ये ऑलरेडी कह चुके हैं, बार बार ये कह चुके हैं जब हम पोर्ट असाइन करते हैं तो हम एज इट इज़ उतने पोर्शन के ऊपर पोर्ट असाइन नहीं करते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी एंटेना की लैब में बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था जब इस तरह से आप वेवगाइड असाइन कर रहे हो वेवगाइड पोर्ट तो इसमें आपने उस तरह से वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। लेट्स से अगर ये -11 है तो इसमें 11 का इंक्रीमेंट कर देना है और उसके बाद अगर आप लोग प्रीव्यू में जाते हैं तो ये इसका जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन से यहाँ तक के दरमियान जो ये पोर्शन है ये उतना ही पोर्शन जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा और इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा और एक वेवगाइड पोर्ट का एरिया जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए। और इसमें कोई वैल्यूज़ को याद रखने वाली कोई बात नहीं है, जितनी भी आपने उसकी लेंथ रखी है उतना आप उसमें इंक्रीमेंट करते जाएं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर वैल्यू 11 आ रही है तो उधर भी 11 एडजस्ट कर दें, यहाँ पे 6 है तो इधर भी 6 एडजस्ट कर दें
और यहाँ पे 6 है तो इधर भी 6 एडजस्ट कर दें। उसके बाद प्रीव्यू करें एंड यू कैन चेक दैट यहाँ पे पोर्ट 1 के ऊपर जो है वो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो उस हिसाब से जो है वो उसकी ओवरऑल हर साइज जो है वो साइज़ में बड़ी है। तो इतना ही इसका जो पोर्ट का साइज़ होना चाहिए और इसको ओके कर दें तो ये हमारे पास जो है वो पोर्ट 1 आ जाएगी। रोटेट करें तो ये हमारे पास जो है वो पोर्ट 1 आ जाएगी। अब इसी तरह से जो है वो क्या हमने पोर्ट 2, अब पोर्ट 2 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ताकि बाद में हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को चेक करें तो ये एज इट इज़ उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से हमने लैब मैनुअल में इसको कहा हुआ है। तो इसलिए अब ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे पोर्ट 2 आ जाएगी। ओके, अगर पोर्ट 2 हमारे पास इस तरह से आ जाती है तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका बैक साइड पोर्शन आ जाएगा और इसको हम थोड़ा सा जो है जूम कर लेते हैं, F प्रेस करें और इस हिसाब से जो है वो हमारे पास ये इसका पोर्शन ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जब ये सेलेक्ट पोर्शन हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, सिमुलेशन में जाना है, वेवगाइड पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक डायलॉग बॉक्स जो होगा उसमें हमने वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारी वैल्यूज़ हर एक पोर्ट के हिसाब से जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, लैब मैनुअल में ये पूरे का पूरा डायलॉग बॉक्स और इसमें इंटर्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर किसी को वैल्यूज़ इंटर करने में जो है वो मसला होता है, वैसे तो ये सिंपल ही है कि जितनी आप उतना इंक्रीमेंट उसमें कर दें जितनी उसकी ऑलरेडी वैल्यू है। तो 11 है तो 11 तक का उसमें इंक्रीमेंट कर दें। तो ये -11 हो जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सेस के लॉन्ग इंक्रीमेंट आएगा। +11 में यहाँ पे प्लस का ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है तो ये पॉजिटिव साइड पे जो है वो उसका इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से सिमिलर वैल्यूज़ हैं। बहरहाल अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग लैब मैनुअल में ये सारे डायलॉग बॉक्सेस गिवन हैं, आप रिव्यू करें और उसके बाद ओके करें। ये हमारे पास पोर्ट 2 हो गई। तो ये जो मेन वेव गाइड हमारे पास थी उसमें हमारे पास ये दोनों पोर्ट्स हमारे पास आ गए हैं। आप इसको रोटेट करके चेक कर सकते हैं। ये पोर्ट 1 है और ये हमारे पास क्या है, पोर्ट 2 है। ओके, उसके बाद एक दफ़ा फिर लैब मैनुअल की तरफ चले जाते हैं कि जो हमारे पास HR में था उसको हम पोर्ट 3 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पोर्ट 3 HR में हमारे पास क्या था, जो कि इसका जो है वो कोलिनियर है और ये हमारे पास इसका HR में और ये क्या है इसका ER में। तो अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि HR वाली साइड हमारे बिल्कुल सामने आ जाए और F प्रेस करें और उसके बाद ये इसका फेस सेलेक्ट हो गया। सिमुलेशन में जाएं, वेवगाइड पोर्ट के ऊपर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें वैल्यूज इंटर करें। ओके, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। -11 है तो इसको 11 एडजस्ट कर दें और ये 11। अच्छा, ये इसमें मैं आपको बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको भी आप लोगों ने समझ के करना है। देखें, अगर हमारे पास -6 था तो यहाँ पे दरमियान में माइनस का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है और अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा तो वो 6 भी माइनस होगा। और माइनस होने का मतलब ये है कि वाई मिन जो कि नेगेटिव एक्सेस के अलॉन्ग ऑलरेडी एक हमारे पास पोर्शन था तो उसी एक्सेस के अलॉन्ग -6 का मतलब है उसी एक्सेस के अलॉन्ग दोबारा उसमें उतना इंक्रीमेंट होगा और हमें हर साइड पे इस तरह का इंक्रीमेंट करना है। तो इसलिए जब +6 होगा तो हम यहाँ पे अकेला 6 लिखेंगे और प्लस का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है तो वो पॉजिटिव साइड पे इंक्रीमेंट होगा। ओके, ओके कर दें। ये हमारे पास जो है वो पोर्ट 3 भी बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक ही पोर्ट रहेगी और वो हमारे पास क्या है, पोर्ट 4 है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, ये हमारे पास ER में है, F प्रेस करें और उसके बाद इसको जो है वो आप थोड़ा सा मूव करें, ये इसका पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। वेव गाइड पोर्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में अगेन उस तरह से वैल्यूज़ को एडजस्ट कर दें। ये हमारे पास 11 आ जाएगा, ये 11 और ये हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। तो हर साइड से जो है प्रॉपरली इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से एक कंप्लीट हाइब्रिड टी जो है वो डिज़ाइन हो गई है। तो ये हमारी जो है वो लैब का टास्क था। इस तरह से जो है वो हमने हाइब्रिड टी जो है वो डिज़ाइन करनी थी और उसके बाद कुछ यहाँ पे जो है वो लैब टास्क हैं। हमने जहाँ पे जो लैब मैनुअल में डिफरेंट पोर्ट्स असाइन की भी थी उन पोर्ट्स के मुताबिक हमने जो है वो उस तरह से पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 एडजस्ट किए हैं। कुछ हमारे लैब टास्क हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि डिज़ाइन सेम हाइब्रिड और मैजिक टी यूजिंग CST आप लोगों ने खुद ये डिज़ाइन करनी है अपने पीसीस के ऊपर। उसके बाद ऑब्जर्व एंड वेरीफाई द फोर डिस्कस पॉइंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिड टी, और वो आपने कैसे जो है वो ऑब्जर्व करने हैं और वेरीफाई करने हैं। आपने ई फील्ड में जाना है, उसके बाद 2D में जाना है और रिजल्ट्स को देखने हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रह गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फील्ड मॉनिटर में जाना पड़ेगा, और हम मोस्टली यहाँ पे इस तरह की वेवगाइड्स के केस में जो है वो हम ई फील्ड ही डिफाइन करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह की सिंपल वेवगाइड की थी वो 6.8 आ रही थी, तो हम इसको 3-4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिफाइन कर देते हैं। जैसे इसको हम 5 पे भी डिफाइन कर देते हैं, 6 पे भी डिफाइन कर देते हैं, 7 पे भी डिफाइन कर देते हैं और 8 पे भी डिफाइन कर देते हैं। इस तरह से डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका ई फील्ड, और इसको ओके कर देते हैं। और हमें पता है इसके बाद फर्दर क्या होती है, हमारे पास सिमुलेशन होती है। होम में जाएंगे और स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। तो हमने स्टार्ट में क्या किया हुआ था, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन नहीं की हुई थी। अभी हमने फील्ड मॉनिटर से इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज तो डिफाइन की हुई है, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो तो डिफाइन की हुई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन नहीं की। तो लेट्स से इसको जो है वो हम 5 से लेके 10 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास जो है वो कुछ टाइम लेगा सिमुलेशन में, और सिमुलेशन के बाद हम इसके जो है वो ई फील्ड, एच फील्ड और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो आप लोगों का यहाँ पे लैब टास्क है वो ये है कि आपने ऑब्जर्व एंड वेरीफाई द फोर डिस्कस पॉइंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिड टी। कैसे करना है, आपने ई फील्ड में जाना है। ई फील्ड में कहाँ से जाएंगे, 2D रिजल्ट से। तो 2D रिजल्ट से जो है वो ई फील्ड में आप लोग जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इजीली इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इसको वेरीफाई कर लेना है। अभी हमारे पास इंशाल्लाह टाइम होगा ड्यूरिंग लेक्चर। पहली बात तो यह है कि आप लोग खुद इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर CST की स्क्रीन शो हो जाती है, तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। तो इसकी सिमुलेशन होगी, सिमुलेशन के बाद जो है वो आप लोगों ने इसको वो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर फर्दर इसमें जो भी चीज़ होगी वो हम जो है वो आगे अपने ऑनलाइन लेक्चर में जो है वो इसको देख लेंगे।